Hello, my dear competitive aspirants. Welcome to the MEDIITRATOR Academy YouTube channel. Now, in the last video, we had decoded the GS2 paper of main syllabus UPSC and upcoming Mpsc exams, right? So, today's we are going to discuss a GS3 paper of UPSC mains and upcoming Mpsc 2025, right? So, this is the GS3, right? The statement of GS3 is the technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management, right? This is the statement of GS3 paper of mains, right? So this is the UPSC MPSC mains. Okay, 250 marks and 3 hours, right? So GS3, this is the GS3 paper, right? The statement is technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. Okay, this is the statement of GS3, right? The technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. Okay, so these are these subjects. This is the science and technology. This is the economic development in Indian economy. This is biodiversity and environment, right? This is the internal, external securities and disaster management. Okay, these are the subjects. Okay, so there are some key points, right, in their syllabus. Okay, so we decode these points according to these subjects. Okay, so the decoding, the first, economic development, right? This is not a economics. Okay, this is the economic development, right? So the first point of economic development, Indian economy and issues relating to the planning, mobilization of resources, growth, development, and employment, right? This is the point one under the economic development, right? So the Indian economy, issues relating to the planning, mobilization of resources, growth, development, and employment means हमें क्या पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, राइट? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, राइट? जो बीकॉम एमकॉम में होता है वो नहीं, हमें जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, राइट? So this is the Indian economy, and again issues relating to the planning in the economy, right? The mobilization of resources, their growth and development and employment. जो भी issues है, जो भी इंडिया में issues चल रहे, कौन से related planning, mobilization, resource को mobilize करने में, growth, development and employment, like unemployment. These are the issues, right? So ये हमें क्या करना है कि कोई भी किताब पढ़ रहे तो सिलेबस के पॉइंट से ही पढ़ना है ना? एक आध कोई भी किताब उठा रहे तो हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी, राइट? यूपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है ताकि इस सिलेबस के हिसाब से हमें बुक पढ़नी है, राइट? तो एक सब्जेक्ट के 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक ही किताब 10 बार पढ़नी है, लेकिन कैसे कि जो भी की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, उसके रिलेटेड ही किताब में पढ़ना है। किताब लो, करंट अफेयर की मैगजीन्स या फिर हिंदू न्यूज़पेपर लो या फिर गूगल करो, राइट? जो भी है बेसिक्स और करंट
के साथ नोट्स निकालने इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकेंड पॉइंट, इंक्लूसिव growth and issues arising from it. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूसिव ग्रोथ मीन सर्वांगीण विकास, राइट। दिस इज एंड इश्यूज अराइजिंग, और उसके लिए जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, राइट, वो हमें एड्रेस करनी है, राइट। नेक्स्ट, तो ये इश्यूज कहाँ मिलेंगे? लेटेस्ट करंट अफेयर्स में, इसलिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, राइट। सो द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजटिंग, राइट। हर साल गवर्नमेंट का बजट आता है और इकोनॉमिक सर्वे, ये गवर्नमेंट के गैजेट होते हैं, तो ये हर साल पढ़ना है। जैसे कि वैसे टर्म्स प्रीलिम्स और यूपीएससी के मेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी जिस्ट है बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का, इतना भी पढ़े तो भी डायरेक्टली स्टेटमेंट आते हैं। तो इकोनॉमिक बजटिंग, सर्वे एंड गवर्नमेंट बजटिंग। नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स from various parts of the country, different types of irrigation and irrigation system, right, storage, transport and marketing of agricultural produces and issues and related constraint, okay, e-technology in the aid of farmers. Okay, now dear aspirants, this is the major crops and cropping patterns in the various part of the country। मतलब हमारे क्या पढ़ना है कि हमारे इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन से है, जैसे पैडी, मेज, व्हीट, राइट, और वो डिफरेंट पैटर्न्स क्या है क्रॉपिंग के, जैसे रोटेशनल मेथड्स, है ना, मिक्सिंग, इंटरक्रॉपिंग, ये जो भी पैटर्न्स है ये कौन अपनी कंट्री में कहाँ 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 स्थित है, कौन से एरिया में कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं और पैटर्न्स किए जाते हैं, उसकी स्टडी हमें पढ़ना है। और उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ वाटर, राइट, है ना, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, राइट, मीन्स the irrigation, why is it important? So because it reduce the water wastage, right? So this is the irrigation system like drip irrigation and sprinkle irrigation, right? The storage, transport, marketing of agricultural produces, जो भी agricultural product है उसका storage फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग फैसिलिटीज और उसके रिलेटेड इश्यूज एंड कंस्ट्रेंट, ये भी आपको नोट डाउन करना है ना, किताब पढ़ते समय ध्यान देना है। इसके बाद ये टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, जो फार्मर के लिए कौन से हेल्पफुल है। अभी जो भी टेक्नोलॉजी जो है, जैसे ऐप है, तो वहां पे पेड़ के पत्ते जो है उसकी फोटोज निकालो, आपको वो पता चलेगा कि कौन से डिसीज है, उसके लिए कौन से पेस्ट यूज करना, पेस्टिसाइड यूज करना है ना। तो ये सब ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको पढ़नी है, राइट। सो नेक्स्ट, इश्यूज रिलेटेड टू direct and indirect farm subsidies, right? Next, minimum support price,
and public distribution system, right? Objective, functioning, limitations, and revamping, etc., right? Technology mission and economics of animal rearing. देखिए एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट इशू द रिलेटेड टू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, जो भी फार्म के लिए सब्सिडी आती है, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो उनके इसमें क्या इश्यूज आते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है ना, फार्म एग्रीकल्चरल के लिए, सॉरी पैडी के लिए, राइट? तो वो सब क्या है, उसके रिलेटेड इश्यूज क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी आप राशन लेते हैं, अनाज भंडार, राइट? वहां से तो वो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शनिंग, उसका लिमिटेशंस और रिवैम्पिंग क्या है, ये सब आपको ग्राउंड लेवल पे भी एनालिसिस करना है, ताकि मेंस में आंसर लिख सको, और करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, करंट में इश्यूज क्या है, वो लिखना है, राइट? नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी मिशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, है ना? हमारे खेती के साथ साथ जो भी एनिमल रियरिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, राइट? उसके रिलेटेड सभी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ओके, नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग एंड related industries in India, scope and significance, their location and upstream and downstream requirement, and last, supply chain management. Okay, dear aspirants, next point, the food processing and related industries in India, राइट? मतलब जो भी फूड प्रोसेसिंग होती है, जो इंडिया में फूड प्रोसेस किया जाता है, और उसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज, वो इंडिया में, उसका लोकेशन कहाँ है, उसका स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप्स क्या है, राइट? और उसके लोकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ फूड प्रोसेसिंग और इसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से होता है, उसके बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग और सप्लाई चेन उसका कैसे होता है, वो सब आपको लिखना है, राइट? तो हम कोई भी इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ते तो सिर्फ किताब पढ़ रहे, राइट? लेकिन वो कौन से वे में पढ़ना है, तो इस सिलेबस के वे में पढ़ना है। हम एक साइड में पढ़ते लाइब्रेरी में किताब, है ना, स्टार्ट टू एंड, महीना महीने चलता है ना? क्या होता है कि हमें तो किताब लर्न है, याद है, लेकिन इस वे में नहीं है, राइट? तो क्या होगा कि आपकी कभी प्रीलिम्स और मेंस नहीं निकलेगी, राइट? तो इस लेवल पे पढ़ना है, और इसके आपके एक किताब पढ़ने के बाद आपके हर GS-2, 3, 1, 3, 4 जो भी GS है, पेपर्स है, उसके अलग अलग बुकलेट होनी चाहिए, खुद के नोट्स के, राइट? वो उसमें फैक्ट्स और करंट अफेयर्स होने चाहिए, राइट? सो द मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, राइट? द नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट, effects of liberalization Indian economy, changes industrial policy,
and effects on their growth. Right, next point, the land reforms in India. Right, so this is the land reform. जब भी land reforms हुए उसका हमें इसके लिए हमें उसका फैक्चुअल डेटा चाहिए, उसका ओरिजिन क्या है और अभी लेटेस्ट में क्या प्रोविजंस है और क्या करंट स्टेटस है, वो आपको नोट डाउन करना है. नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. राइट, एंड चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट्स ऑन देयर ग्रोथ. राइट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तो इसके लिए हमें इसके लिए बेसिक्स ये पढ़ना है. जो 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है, राइट, वो आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है. उसके बाद रेफरेंस के लिए मार्केट में बुक है कोई भी ले लो, और उसके बाद बजट इकोनॉमिक सर्वे. राइट, तो ये सब आपको पढ़ने हैं. और करंट मैगजीन्स, ये अभी जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स है उस हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस में ये तो बेसिक्स तो पता ही है, लेकिन करंट अफेयर्स में करंट आपको इसके रिलेटेड पूरा पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के. राइट, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या आता है? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पोर्ट्स, नेक्स्ट रोड्स, railways and waterways and airports, etc. These are the infrastructure of India. Right, the energy in the India: ports, some roads, railway tracks, waterways and air roads. Right, जो भी है ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, तो इसके रिलेटेड सभी चीजें हमें याद होनी चाहिए. इसके ऊपर की नोट्स बनने जरूरी है. राइट, एंड लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स like triple P means public private partnership. Investment model means the investment in India, right, means गवर्नमेंट रहे या प्राइवेट, या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट गवर्नमेंट. राइट, तो दिस इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. दीज आर द इन्वेस्टमेंट मॉडल, राइट, टू ग्रो द इंडियन इकोनॉमी. सो दिस इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट, दिस इज द सब्जेक्ट. नेक्स्ट हम जाएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर. ओके, सो ये नोट डाउन करो. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी. This is the technology. Right, in prelims some question is there like general science, and this is the technology. Right, so the first point, science and technology. आने वाले लेक्चर्स में हम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सीरीज बनाएंगे, उसमें हर पॉइंट्स क्लियर होगा. राइट, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, their applications and their effects on everyday life. Okay, this is the first point, science and technology, the technological development, their application, uses of application and their effects on everyday life. मीन साइंस टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हुए, उसके यूजेस क्या और उसका इफेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, वो सब हमें लिखना है. राइट, नेक्स्ट, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस in science and technology. Achievements of Indians in science and technology. Indigenization of technology. Indigenization
and developing new technology. Dear aspirants, now what is point? The achievements of Indians in science and achievements of Indian in science and technology. मतलब इंडियंस का क्या अचीवमेंट्स है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब खुद की टेक्नोलॉजी. हम इंडियंस ने कौन सी टेक्नोलॉजी खुद इन्वेंट की है वो, एंड द डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, राइट. जो अभी चंद्रयान में जो भी हमने भेजा है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनाइजेशन वाली है, मतलब खुद बनाई हुई, राइट. तो दैट इज द इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड लास्ट बायोटेक्नोलॉजी, राइट. मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट बोला जाता है डियर एस्पिरेंट, द अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ, राइट. बी अवेयर, सिर्फ अवेयर रहना है. मतलब आईटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्पेस रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या रिसर्च चल रहा है ना, लेटेस्ट क्या करंट अफेयर्स में क्या आ रहा है, कंप्यूटर के रिलेटेड जैसे वाईफाई लाईफाई क्या होता है, रोबोटिक्स में क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग क्या चल रहा है, राइट. नैनो टेक्नोलॉजी है ना, नैनो पार्टिकल्स, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सब चीजें हैं. तो हमें नोट करनी है करंट अफेयर में. करंट अफेयर पढ़ते समय वो तो वास्ट होता है, तो फिर करंट अफेयर कैसे पढ़ना है. तो हम कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी की, तो उसका सिलेबस साइड में होना चाहिए. जो भी किताब हमारे पास आती है, जो भी मैगजीन आती है, तो उसमें क्या पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है. फिर क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में है, जो स्पेस में है. यदि आपको याद है कि आईटी, स्पेस, कंप्यूटर क्या होता है, रोबोटिक्स, तो आप वो पढ़ोगे, राइट. तो वैसे ही लिखना है, राइट. सो नेक्स्ट, issues related to the intellectual property rights, means IPR, राइट. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है जो इंडिया में, तो उसके रिलेटेड इश्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं. मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब आपने कोई प्रोडक्ट फॉर्म किया या फिर प्रोसेस पेटेंट की या प्रोडक्ट पेटेंट किया, राइट. जो भी चीजें बनाई आपने, राइट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर अदर, तो वो उसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, राइट. तो वो हमें एड्रेस करने, राइट. सो दिस इज अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द environment and biodiversity, right. Means environment and include the biodiversity and ecology also, right. So हम लिखेंगे environment थर्ड. उन्होंने सिर्फ एनवायरनमेंट के रिलेटेड तीन चार टर्म्स दिए, राइट. लेकिन हम एनवायरनमेंट के ऊपर टोटल सीरीज बनाएंगे, वो भी इजीली, है ना. उसके लिए वो शंकर आइस की किताब पढ़ते, आप पढ़ो, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे. क्यों? अब आज जो भी आ रहा है वो सब करंट अफेयर, करंट बेस में आ रहा है, तो फिर क्या हम वो नहीं पढ़े? नहीं, पढ़ना तो है. क्यों? तो बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे इकोटोन क्या है, राइट. व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज क्या है, राइट. व्हाट इज लेजिस्लेशंस, राइट. जो एक्ट्स है, पॉलिसीज क्या है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, वो सब पढ़ना है. व्हाट इज पोल्यूशन, राइट. ये सब जो पॉलिसीज आ रहे हैं वो सब, और इकोटोन क्या होता है, राइट. नीचे क्या होता है, वो सब आपको पढ़ना है. तो इसके लिए आपको वो बेसिक्स, कोई भी किताब उठाओ, बेसिक्स पढ़ो, और उसके बाद अगेन करंट अफेयर्स पढ़ना है, राइट. तो एनवायरमेंट के लिए तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या होता है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट. एनवायरमेंटल पोल्यूशन. देन पोल्यूशन हुआ तो क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. अभी डिग्रेडेशन हुआ तो क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करना पड़ेगा. तो कंजर्वेशन करेंगे तो इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे उसका, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट
असेसमेंट, राइट, EIA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में भी, राइट, तो हमें सबसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, राइट, तो ये यहाँ से इसका बेसिक्स भी पढ़े तभी भी करंट अफेयर्स में जो भी पोल्यूशन चल रहे हैं, मतलब आपके लिपस्टिक्स में कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी पूछा गया था। देखिए ये जनरल क्वेश्चन होता है, तो ये आपके जनरल अवेयरनेस से आता है, राइट, कोई किताब में नहीं होता, राइट, तो ये तो उसका डिग्रेडेशन कैसे हुआ, उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, राइट, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, वो सब हमें पढ़ना है। और आगे वाले नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर्स में हम जरूर उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो द डिजास्टर मैनेजमेंट लेते हैं यहाँ पे। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए भी यूपीएससी ने जस्ट एक ही वर्ड डाला है, जो भी है डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, तो उसके अंदर कौन से टर्म्स है, जो भी डिजास्टर्स है, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, सुनामी, राइट, एंड अदर आल्सो, है ना, लैंडस्लाइड, दीज आर द डिजास्टर्स। और इसके लिए फिर ये क्यों होते हैं, राइट, इसके कारण क्या है, राइट, इसको कैसे टैकल करें, उसके लिए गवर्नमेंट की कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट्स कर, और हमें क्या करना है, राइट, तो ये सब आप उसी एंगल से इसके नोट्स बनाना है, ताकि आप यूपीएससी एक एस्पिरेंट्स हो, राइट, एमपीएससी एस्पिरेंट्स हो, तो हमें क्या करना है, वो जो भी डिजास्टर है उसका ओरिजिन क्या है, क्यों हुआ है, राइट, उस वो हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, राइट, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट के कौन से प्रोविजंस है, राइट, तो ये सब हमें नोट करना है, राइट। ये हुआ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट, मींस अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज, एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, राइट, एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया। अभी लास्ट है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, राइट, एंड रिलेटेड इश्यूज पढ़ेंगे। ओके, सो इतना लिख लीजिए, राइट, ये डिकोडेड है। अभी हम जाते हैं लास्ट पॉइंट, सिक्योरिटी। Right, the security issues. So the first point, the linkages from development and linkages between development and spread of extremism। देखिए ये सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी मींस दो टाइप की होती है, कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसके लिए क्या पढ़े, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, जो GS-3 पेपर में आता है, तो इसके लिए क्या पढ़े, तो इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना है, इसके लिए यही पढ़ना है कि जो भी करंट रिलेटेड इवेंट्स, इसके लिए बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन जहां तक हो उसके बेसिक टर्म्स टर्म्स याद कर लेना। उसके बाद, है ना, जो भी करंट इवेंट्स में आते हैं उसके एक साल भर, 1.5 साल तक जो भी करंट अफेयर है, जिस रिलेटेड आ रहे सिक्योरिटी के रिलेटेड, उसको आपके पास नोट्स होने चाहिए, वही से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो इसके लिए सेपरेट किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर नहीं पढ़ते तो आप इसके क्वेश्चंस टैकल नहीं कर सकते। ओके, सो द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इसका लिंकेजेस जो भी हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो स्प्रेड हो रहा है, इसका इफेक्ट्स और डेवलपमेंट का क्या है, इसके लिंकेजेस क्या है जो हमें हार्मफुल है हमारे इंडिया के लिए, राइट,
नेशन के लिए. सो द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, राइट. The role of, next point, the role of external state and non-state actors is creating challenges to internal security, right. The role of the external state and non state actors, मतलब state actors जो हमारी आर्मी होती है, non state actors जो civilians होते हैं, राइट, एनजीओज होती है. एक्सटर्नल स्टेट मतलब हमारे स्टेट के बाहर के, जैसे, राइट. तो इनका इफेक्ट्स क्या है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में इसका ये कैसे चैलेंजेस क्रिएट करते हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में, राइट. मतलब नक्सलिज्म, टेररिज्म, राइट. तो ये सब हमें लिखना है. उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे इंडिया में आए, कैसे उसका मतलब वो तैयार हुए और उसका क्या इफेक्ट्स हो रहा है हमारी इंडिया के ऊपर, ये सब हमें वो लिखना है, राइट. द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इज क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. challenges to internal security through communication networks, role of media, and social networking sites is in internal security challenges, right. The challenges to internal security है ना. तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कौन कौन चैलेंजेस कर रहे हैं, राइट. दो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, राइट. अब रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, ये हमें कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म है या फिर कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. तो ये सब दोनों तरीके से हमें लिखना है, राइट. कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बैलेंस आंसर लिखने हैं, राइट. सो द नेक्स्ट पॉइंट, internal security and their management in border areas, basics of cyber security and money laundering and its prevention. ओके. इंटरनल सिक्योरिटी एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, जो भी हमारे बॉर्डर है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी एंड देयर मैनेजमेंट, और उनको मैनेज करने के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो बॉर्डर पे है ना, बॉर्डर एरियाज पे जो भी हमारी बॉर्डर लाइंस है और नेबर कंट्री के साथ, वो सब हमें पढ़ना है. उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, वो उसके रिलेटेड सभी टर्म्स याद होने चाहिए. और नेक्स्ट है, लास्ट है द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन. मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मतलब जो भी टेरर फंडिंग हो रही है टेररिज्म के लिए, राइट. जो भी नक्सलिज्म के लिए फंडिंग हो रही है, ये सब, और वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और उसके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, ये सब हमें पॉइंट आउट करना है, राइट. और लास्ट पॉइंट है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, right. और लास्ट है द वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड सम एजेंसीज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया. ये सब आपको पता होने चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज है, राइट. ये सब, तो ये हुए हमारे
GS-3 पेपर के सभी डिटेलिंग्स, राइट। तो आपको ये सब नोट आउट करना है और किताब अपने बुक में लिखना है, उस हिसाब से आपको किताब पढ़नी है विद करंट अफेयर के साथ, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपके पास होने चाहिए और इसको ऐड करना है करंट अफेयर के साथ, राइट। तो आपको बेनिफिट होगा। सो थैंक यू।